जाए बलिहारी हो रसिया में तो शरण तिहारी हो रसिया में तो शरण तिहारी। छो विमलयमृत धामवासी सौख्य राशि श्री हरि हे भक्त जन प्रतिपाल राखो शरण मां करुणा करी हे अखिल विश्वाधार तनु साभाळ देजो मय महा गणित ब्रह्मांडो युडे तव धामय अक्षरमाय वाचे सकल विभूति दिव्य शक्ति आपमाथि उतरी हे भक्त जन प्रतिपाल राखो शरण मां करुणा करी अवतार लई अवनी विशेष धर्मनि ग्लानि समे निज भक्त करण रूप बहु बहु धारिने विचरो तमे उत्थापि मूलया धर्म नाश धर्म स्थापो छो परि हे भक्त जन प्रतिपाल राखो शरण मां करुणा करी आ समय मां सामर्थ्य रूप गण प्रगट पूर्ण कया प्रभु भव मां भटकता जीवनो यज्ञान घन हरवा विभूषण धर्म भक्ति ज्ञान ने वैराग्य निवृष्टि करी हे भक्त जन प्रतिपाल राखो शरण मां करुणा करी विश्वेश सो सकल विश्वतना विधाता प्रातः सकल मंगल शांति दाता माटे करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करूँ प्रणाम ज्ञान नजीक थी હે જેસુમાં કીધા છે કીધા તારે જેસુમાં કીધા છે મેં કહી દીધા તારા જેસુમાં ઓકે 6 મિનિટ ઓકે હે હરી kita बैठी था अंबे स्वामी कर दी तो क्या मेरी स्वामी हांडो कर दी थोड़ी हम तो kita kita में गुड बॉय હવે બીજા સ્વામીને કર ગુડ બોય ઓલા સ્વામીને કહે હા ગુડ બોય હાલો મોટા સ્વામીને કરવા દે યસ લેટર ટુમોરો જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ ઉભર 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 હા કે હા ઉભર સંગ ઉભર ઓકે હાલો જય સ્વામિનારાયણ કરો ગુડ બોય બરોબર બરોબર
હવે આવે હરી ઉભો રહે સ્વામી પા ગુડ બોય હવે પછી તે જય સ્વામિનારાયણ કે Go to school? Yeah, now he's ready to go to school, right, Eddie? Yeah? Yes. School. How you go? Goodbye. Bus. Bus? Okay. All right. ભાઈ જય સ્વામિનારાયણ કરે જમીન ભાઈ જય સ્વામિનારાયણ કે સારું કે જય સ્વામિનારાયણ ના નથી કોઈ હરી શાંતિ સ્વામી છે Yeah. ગો સ્વામી Yes, sir. હરી નો જાય ઉભો રહે હા ગો દે જરૂર રહેશે સ્વામી ગુડ બોય શાંતિ સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ કરો શાંતિ સ્વામી તો ફોન ઓપરેટર થઈ ગયા છો જય સ્વામિનારાયણ. જય આવો આવો મારો વિડીયો લઈ જાઓ મારા. લે હરી જય સ્વામિનારાયણ કે જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ બોય. વાત કરવી છે? વાત કરવી? ના? And who was that on there? હા? Who was that on there? સ્વામી in India, from India. ટોક ટુ જય સ્વામિનારાયણ કે લે આમ આવી જાય જોજે કે સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ Swami Jaswanand. હું હરી બોલું છું હરી સ્પીકિંગ This is Hari. ધીસ ઇઝ હરી Good. ગુડ ગુડ જય હું ધૂન કરું કે ધૂન કરું ધૂન કર ઇંગ્લિશમાં વાત કરતા Nothing. સ્વામી નામ રાખવાનું. Nothing. Nothing. No. I'm not doing anything. No. we enjoying with Swami ke so Swami is here Mota Swami is here 5. Hobby? I don't know what you're talking about. Yes. I don't know what you're talking about ઓકે તો જય સ્વામિનારાયણ. yes. These are our monks. They are very good pure people. And so we will be happy and then they will bless you as well. Okay? That's fine. Hello there, how you doing? And this is the Deva Prasad Swami, this is Vishwaprakash Swami, this is the Anand Swami, this is Bhagavad Swarup Swami, this is Nitya Swami, and this is Shanti Swami. They are all the Swamis. Okay. And they are spiritual monks, they teach the yoga stuff in India. And Mike is a veteran, he's used to be in the army. Okay. And he's a contractor, ex-contractor. He used to build up the development. And I said, we'll also bless you too. So come down, everybody here, and stand here with the mic and give blessing. Here, so what kind of disease we call disease. So you have so bless him so he can life will be better off. Okay. So stand here, everybody. Come here. Stand. Mahavir Maharaj, Swami Viyavan. हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वतस्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यश्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति तावानस्य महिमा दोजते रमणं विधाता दाता सुखानां मनसे स्थितानां तनोतु कृष्णो खिलमङ्गलं नः सजानंद स्वामी महाराज અને એકદમ બે કેમ્પસ અલગ છે સ્વામીજી હા can you give me one flower from that
That's good. They want to come and yoga. Yeah, anybody can come here. Anybody can come here. It's open for everybody. Any religion, any kind of person. And this is very important. Okay, yeah, go ahead and take it. You take it. You got a nice area out here. How long you been living here? About 3 years. Swaminarayan Gurukul Vedic Center, Phoenix area. એ વેલ છે વેલ કૂવો એ કૂવો છે એ વોટર કૂવો હે જાવું છે હાલો ને હું આવું હું વાતો કરે છે ને તા ભૂમિ લઈ सिद्धांत बोध का महाराज Okay, let's go upstairs. Okay. I have bathroom there.
pretty warm in here right now. Yeah, oh yeah, one thing. Put the cooler up like this. પૂછ લેજો અને એનો લેન્થ ને ઓલી 35 બાય 50 એટલે 1750 સ્ક્વેર ફીટ થયું. રાઈટ રાઈટ 1750. તમે તો બંધ નથી કર્યું અરે My fiance and I are getting married here. I gotta get all this stuff cleaned up. Right. Oh, okay. very good. God bless you. Swamiji giving you blessing. He said, I said she likes when you were chanting the mantras, Vedic mantras. Yes. And I said she like it. That shows the presence of God. Oh, And Swamiji very happy to bless you Thank you. and your husband. I mean, he's going to be married to you, right? Yes, Right. That's yes, wonderful. soon. Wonderful. Very Yes. good. He's a nice gentleman as well, Mike. Oh, he's a wonderful man. Okay, so you want to say something? How you felt when they were chanting the mantra? Oh, I was listening and it was just beautiful. Yeah. It was all in sync and I didn't know if it was a prayer Ah. or a special song. but That's it good. was- Yeah, it's a we call Vedic mantra. 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 It's a spiritual mantra. It's the power of God. Oh, Yeah, it's wonderful. that's good. Thank you. Oh, Thank you. Well, thank you for including me for a No moment. problem. Why not? Yeah, God they are bless very you. wonderful people. They are wonderful people. So they have their own. All right. Very good. So God bless you, and Swamiji is very happy to see you, and we will see how it goes with this. I will talk to the other person and all those people, and I'll let you know within a week or so. Okay. Okay, how long before you'll know? Okay. Like after you buy it, I'll need some time to No move problem. move No problem. everything. No problem. We'll give you all time to you. You are a wonderful man, so we like you, and Okay. no problem. We are, they are wonderful people. They are beneficial for all the soul. I got good karma off them. That was really neat. Yeah, exactly. Right, exactly. See, it's very hard to find like these great sadhus. They are really pure people and people of God, and that's what maybe your good karma. That's why you had a blessing. Right, that was neat. Yeah. You can let Tazzy out. See me. Yeah, that's fine. All right, I'll see you, Lynn. Right? Yes. Fair game. Yeah. And what's your last name, Arlene? Right now it's Kerr. Kerr. Will be Nielsen. Nelson soon. Yeah, that's My wonderful. fiance. That's very good. Very Yes. good. Very good. Okay, Mr. Nielsen. Nice to meet you. And that's Tazzy. Teji, bye bye, Teji. Nice to Bye-bye. Hey, dear. She's a good dog. God bless you. Yeah. Lord Swaminarayan. Good. Okay. પકડજે જૈનમાન તારું લઈ લો તો પછી આયા હું સ્વામી ઉભો રહો ઘડી ઓકે ઉભા રહ્યો સ્વામી હા એક મિનિટ જય મહારાજ સહજાન મહારાજ હરે કૃષ્ણ મહારાજ કષ્ટ ભંજન દેવ હરે કૃષ્ણ LLC આમ તો ઓફિશિયલ ટ્રેડ નામ રાખ્યું છે ક્વીન ક્રીક ફેમિલી મેરેજ લાવો તમે રહ્યો જમીનભાઈ થોડું ઘણું તમે લઈ લો સામે મારી બાર લાવો ના કાઢેલું છે આ ફિલ્ટર કરેલું છે જય મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગરમ છે કામ કરતા લાગે હા ઉપર કરતા ઉપર માળ છે હજી અને ઉપર માળ છે તે ખબર ને ક્યાં ઉપર કરતા હોય સાપડા ક્યાં કરે આપડા સાઈડમાં કરે બાજુના રૂમમાં કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન
નવું ગુરુકુળ જોઈ આવ્યા, નવી ઓફિસ જોઈ મારા આજે બીજી વાર. આ મહારાજના પગલા દાદામાં દાદા ગુરુકુળ. બધી બધી હવે ગુરુકુળ જેટલા મહારાજ કરે, મહારાજ પગ દે ને ગુરુકુળ ન હા, બરોબર. જ્યાં જાય ત્યાં લોકોને હારા કરે. સ્વામી આ બાજુ કર્યું ને? સરસ, સારું. જય મહારાજ સહજાન સ્વામી મહારાજ. ચાલુ કરજો. અમેરિકા કેટલા ખર્ચો? મહારાજ જેટલા આ વખતે 3 ફેર્યા છે. એક શિકાગો અને એક આ. એટલે મહારાજ આમાં પણ આશીર્વાદ દેવાના છે. બધા જે આવે એ એકદમ હાજર થઈ જાય. એ માંદા હોય ને હાજર થઈ જાય મહારાજનું ગુરુ. બધાને કહી આવ્યું એક વાર તો જઈ આવજો लोकांचं आपलं नाम काही नाही मोजायचे लोक आपण डिफरंट काही ना त्या योग म्हणतात म्हणतात मेडिटेशन योग भक्ती योग લોક માટે સારું હે આપણે એવું છે એમના બધા માની ગોમને બધા કરી દો ઓ त्यामध्ये लेडीज मध्ये लेडीज लेडीज खूप आहे काय लोकांनी They don't need anything from this world. They try to bless to all the soul of this world. They don't want to talk directly to the woman because their negative force comes. They can go down. Once they keep this vow for a longer time, they become powerful and they get the, like whatever they want. It's a like philosopher's stone. But in order to teach this new devotee, they want to continue that vow so that discipline can learn fast. They'll go right. આપણું જો એ પહાડ જ છે આપણા પહાડ પાછળ છે કે આ છે ને આ વેસ્ટમાં આવ્યો આ પહાડ વેસ્ટમાં આવ્યો ઓલી બાજુના એ સાઉથમાં આવ્યો આને આને આ સાઈડમાં ને આપણે પહાડ ઉપર જ છે પહાડની બાજુમાં જ બાજુમાં કન્ડિશન સારી છે ચતુરભાઈ દશેરાના ઉત્સવ વખતે ફાઇનલ થઈ જાય એવું કે કરો જાહેરાત થઈ જાય
ફિનિક્સ સેન્ટરથી આપણા ઘરથી 10 ફિનિક્સ સેન્ટરથી કેટલું કીધું? 34 આપણે આ તો એ રીલ હતો હા એટલે આપણે પેલું નથી કાલ બતાવો 160 સેકન્ડ ઉતરી જાઓ, જલ્દી ઉતરી જાઓ. આનું છે એક યુનિવર્સિટી पार्किंग गाना सकलारति हंता सधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तमो तुष्णोऽखिल मंगलं नः सहजान स्वामी महाराज की आरती दिवस है आरती बोलो आरती बोलो डिस्प्ले दीजिएगा ना अपन भगवान का आरती करना डिस्प्ले स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी चरण सरोज तमारा अंधु कर जोड़े प्रभु अंधु कर जोड़े चरणे शीश धराथी चरणे शीश धराथी दुख नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता प्रभु विजय कुल तंगारे पामर पतित उधारा पामर पतित उधारा गणित नर नारी नित्य नित्य नवतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रकट नो जय दर्शन कर से प्रभु जय नाम बहु की थी मुक्तानंद कह मुक्ति मुक्तानंद कह मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी
बैठिए स्वामी जी। देव स्वामी सही तरह ये भगवान आज मारे ओरडे आवाय विनाशी अलबेल भाई में बोलाविया रे सुंदर छोगा वाळो छेल निर्खानेना बळी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभा श्री कहू रे निरखिला जे कोटिक काम गोथि गुलाब नारे कंठे आरोपा में हार लईने वारणारे चरणे लागी वारंवार अप में तो याद रे विश्वाचा कड़ियो कड़ी प्यार पूछा तशो रे भाई में सर्वे समाचार कहो ने हरि क्या साइड में आओ, साइड में। क्या थकी आवा धर्म कुमार सुंदर शोभतारे अंगे सजिया छे शणगार पहरी पीत बैठिए। अंगे सोथणले सुख देता तृप्त न थाए ने ऊपर ओढ़ियो रे गुढो रेटो जोया लाग सजनी तेना भाग मस्तक परे बांधो मोड़ेड़ो या मोल कोटि करवी शशीर तो वो कुछ कम रहा, तो वैसे ही भगवान के लिए हम करते हैं तो उनमें कुछ कमती रह गई तो उनकी गति क्या होती है। तो भगवान ने क्या कहा कि सूची नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाए थे। मैं भगवान ने कहा कि मैं उनको ऐसी जगह पर जन्म देता हूं कि जो वो पूर्व का जो कार्य है जो आधा है वो उनको जल्दी पूरा कर सके। तो भगवान ने ऐसा कहा कि सूची नाम श्रीमताम पे मैं उनको पवित्र श्रीमंत के घर पे जन्म देता। श्रीमंत के घर पे इसलिए जन्म देता कि आदमी को जब तक रोटी पर रहने का पूरा नहीं हुआ है तब तक वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान नहीं दे सकता। जब तक पेट का ही पूरा नहीं होता तो वो कहाँ से दे सकेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं उनको वो फैसिलिटी देता हूँ और पवित्र गृहस्थ के धन घर पे जन्म। पैसे वाले बहुत है लेकिन माइंड की जैसे माइंड का उनका दो गुण है, एक शार्पनेस और एक होलीनेस। शार्पनेस होता तो आदमी ये मटेरियल वर्ल्ड में प्रगति कर सकता है, बहुत कर सकता है, लेकिन जब तक होलीनेस नहीं रहता तो वो भगवान के मार्ग पे नहीं चल सकता। बुद्धि में होलीनेस भी होना चाहिए। और अब ये सुंदरकांड देखा तो मेरे को बहुत याद है। हनुमान जी की विशेषता बताई है कि बुद्धिमताम वरिष्ठा। हनुमान जी और रावण। गांधी जी एक बार एक जिम में गए तो उधर यंग लोग कसरत करते थे, तो जिम की वो दाव करते थे। गांधी जी ने उनको पूछा तो उधर जिम में एक हनुमान जी का स्टेच्यू था। गांधी जी ने वो युवक लोगों को पूछा कि ये कौन का स्टेच्यू है, तो सब लोगों ने बताया कि ये हनुमान जी का स्टेच्यू है। तो गांधी जी ने पूछा कि ये हनुमान जी का स्टेच्यू क्यों इधर लगाया। वो सब ने बोला कि भाई हनुमान जी है वो शक्ति का प्रतीक है। जितनी शक्ति हनुमान जी में है उतनी शक्ति कोई में नहीं है। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, रावण भी इतना शक्तिशाली था तो उनका स्टेच्यू क्यों नहीं था। हनुमान जी जैसे ये द्रोणाचल को उठाते थे वैसे रावण हर दिन वो कैलाश को उठाता था। इतना शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। उनमें शक्ति कम नहीं थी और बुद्धि भी कम नहीं थी। उनका एग्जाम्पल क्या है कि वो उन्होंने
रावण ने उसी टाइम पे वेदों पर गाइड लिखा है, कमेंट्री लिखा है, तो अभी तक उनका गाइडेंस वो चल रहा है। जो आज कोई ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ रावण का कोई एक स्मृति लगाया रहा हो। ऐसा सब हेट करते हैं, अपना बेटा का नाम रावण कोई नहीं रखता। तो उनकी बुद्धि में मैं पवित्रता देता हूँ और उनकी सिचुएशन ऐसी देता हूँ कि वो भगवान के लिए अपना जो आधा काम है वो जल्दी पूरा करके मेरे पास आ जाएगा। भगवान ने गीता में कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो जो मेरी ओर चले, येन मामुपयान्ति थे, मेरी ओर आ जाते। तो भगवान ने ऐसी महती कृपा अपन को किया है कि अच्छे स्थान पर रखे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट भगवान ने सब पूरी करी है। अभी एक ही काम बाकी है कि अपन को ऐसा डिसीजन लेना है कि मेरे को ये शरीर के अंत में भगवान के पास जाना है, हनुमान जी के जैसा सेवक बनना। भगवान के सेवक 3 थे, भरत जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, तीनों सेवक थे। और तीनों इतने हाई लेवल के सेवक थे कि कोई आदमी ऐसी इच्छा भी नहीं कर सकता कि मैं उनके जैसा हो सकूं या नहीं। लेकिन डिफरेंट काइंड के थे, उनका तीनों का नेचर अलग था। लक्ष्मण जी का नेचर ऐसा था कि वो भगवान से दूर नहीं रह सकते। आपने सुना होता तो ऐसा था कि लक्ष्मण जी और भगवान बहुत छोटे थे तो और पालना में झूलते थे, तभी भी लक्ष्मण जी का ऐसा नेचर था कि भगवान और लक्ष्मण जी का पालना में दोनों को एक साथ में सुलाना पड़ता था और वो उल्टे सुलाना पड़ता था। जहाँ राम का चरण आता वहां पर लक्ष्मण जी का सिर रहता और उनका मुंह रहता, ऐसे उनको। और भरत जी का नेचर ऐसा था, वो भगवान के साथ में नहीं रह सकता। भगवान दोनों खेलते तो भरत जी सामने पार्टी में जाता और सामने वाली पार्टी में जाके भगवान की जीत कराते। तो भरत जी कभी भगवान के साथ में बिल्कुल नहीं रह सकते, भगवान से हमारे को भगवान के पास जाना है, ऐसा डिसीजन ये लाइफ में लेना है। भगवान अपन के हाथों से ये बहुत संसार के काम तो कराते ही, लेकिन ये काम भी एक करने को है। गीता में भगवान ने कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्, जहाँ जाके वापस आना नहीं। जो वापस आते तो शंकराचार्य जी ने बताया वैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा होता रहता है। ये साइकिल है, ये साइकिल वो जन्म मरण की साइकिल, वो साइकिल में से बाहर निकल के भगवान। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही। शर्मा साहब है, बहुत अच्छे आदमी है और वो हमेशा वो कथा भी करते हैं और वो सुंदरकांड की कथा होती है उसके घर पे 15 दिन की एक बार होती है, महीने में एक बार होती है, एक बार भी, तो हम आते रहते हैं। समूह पाठ करते हैं। और वो बोल रहा था कि गुरुकुल तो हमको करना ही यहाँ है और गुरुकुल होगा तो कोठार की सेवा हमारी रहेगी। अपन क्या है कि बच्चों को आजकल अब बड़े तो हैं, वो इंडिया से आए हैं तो उनमें धर्म के संस्कार है। अभी जो नया जनरेशन है वो इधर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनमें जो हमारा हिंदुओं का जो संस्कार डालना और उनको जो हिंदुइज्म क्या है वो बताना, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे बड़े गुरुजी थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों में, नए जनरेशन में कैसे, हमारे चतुर्भाई उधर पढ़े सो है, तो नए बच्चों में जो अच्छा संस्कार आ गए, तो गृहस्थ की रियल संपत्ति अपने संतान है। क्योंकि आप जितने भी कमाएंगे तो उनके हाथ में दे के जाना है, सही है। जो वो संस्कारी हो गए तो आप थोड़ा कम दिया होगा तो वो भी बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। जो उनमें अच्छे संस्कार नहीं होंगे
तो आपको दिया सो थोड़े साल में पूरा कर देंगे। तो इधर तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहाँ समृद्धि है वहाँ बिगड़ने का चांस ज्यादा है। जहाँ पर समृद्धि कम है या बिगड़ने का चांस तो है सभी जगह पे, पर लेकिन ये उनसे थोड़ा कम है। तो अपन एक ऐसी इच्छा है कि एक इधर ऐसा एक गुरुकुल का सेंटर हो और उधर बच्चों का वीकेंड स्कूल हो और उनको अच्छा हमारे हिंदू धर्म के संस्कार चाहते हैं। बहुत अच्छी। चतुर भाई को बताया है। आज अभी ही एक लैंड देखने के लिए गए थे। लैंड अच्छा है, अच्छा है। अभी देखेंगे जो भगवान करते हैं हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी वो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट बताते हैं। 3.5 एकड़ लैंड है। अच्छा। और एक मोबाइल हाउस है और एक दूसरा एक हॉल जैसा है। तो अपन तुरंत ही एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन 4.5 4.75 तो बोलते हैं। ठीक है। देखेंगे एक हो जाता तो अपन डायरेक्ट एक्टिविटी शुरू कर सकते। ठीक है। सहजानंद स्वामी महाराज। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा लगा आपका। फिर भी जब भी आओ हमारे घर जरूर आना। जरूर। आप जो बेंगलोर आप कभी भी जाना होता तो जरूर बोलिएगा। चतुर भाई से वो पूरा फोन एड्रेस पूरा आपको दिला देंगे। या तो आप वो कब सीडी लाए हैं? हाँ, सीडी है मेरे पास। फोन में पूरा वेबसाइट फोन सब है। ठीक है। मैं गया था बेंगलोर मगर फिर सीधा मणिपाल चले गया। अच्छा ठीक। अभी कभी भी जाए तो इधर आप रह सकते हैं और एक नाइट करना है तो नाइट कर सकते। आप ही देखिए। आप ही बन में काज खोले लाइट चाबी क्या से रिसिप्ट है। प्रसाद ले लो। प्रसाद मेरे ले लीजिए स्वामी। हाँ थैंक यू। जय स्वामीनारायण। આરતી ને એવું કરી લેવું છે। આપણો ઘર અહીં નજીક છે, કરવું હોય તો કરી. હા વાંધો નહીં, કરો ને લઈ જાઓ. આરતી જ હા સારું પડશે. जय सद्गुरु स्वामी इंद्र वस्त्र रे आपीने दुखडाले करुणा दृष्टि रे देखी वानज वाले डाबे खंबे रे के सरसना की चाले जमना रे करमारू माला की कैर कटाबो रे करकड़ी ऊपर मेली चाले वालो रे प्रेमानंद रे नित्य नौतम रे लीला करे हरि राय गाता सुनता रे हर जन लाजी चाय सत भावे रे उताड़ा बोचाले हेत करीने रे बोलावे गोवाले क्यारे घोड़े रे चढ़वो होय त्यारे क्यारेक संने रे पीर पधारे त्यारे डाबे रे खंबे घिसने आने घिसने बांधे रे केट सगाते ताने बिरसे शिकागो नहीं आपसे मिले पहले क्या है चल सुन चल हरि बोल प्रभु हरि बोल हरि बोल। माला किसको वहाँ वहाँ पे अंदर भगवान के देख एक मिनट हरे कृष्णा ओके प्रभु जी हाई पर
ભદ્રા ભદ્રા આવો પછી હાથ કરાય આવીએ ફક્તરાજ साइड में जाओ त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये निराश्रितानां सकलात्यन्ता फिर बाद में उसको चांदला कर देंगे, कुमकुम कर देंगे भगत को, और माता जी को साथ में रहना पड़ेगा, आपको हिलाना पड़ेगा। ठीक है। पुरुष हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सहोनिगुं सर्वतस्तद्वाद्यतिष्ठत शाङ्कुलां महापुरुषैर्वेदगुं सर्वं यद्भूतं यत्सर्वं महाभूतानि तत्त्वशेषानो स्वामी आ भगत ने चांदलो कर जरा नरकमान धरावाना आ भक्तराजना दीकरा આપણે કહેતા હતા ને, મેં વાત કરી હતી ને, સ્વામી આશીર્વાદ દીધા હતા। બેબી राधी महाराज चालो करता सर बस। हाँ इधर इधर हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र दास की जय। जय महाराज। हमें लगा दी हरे कृष्ण हरे राम राम हरे सहजानंद स्वामी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि बोल। उधर जाओ, उधर जाओ। धन्यवाद करो। श्री वासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं चितं एव चतुर्भुजं च त्वं भक्त
भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। और सैटरडे जो होता है संडे को सत्संग प्रोग्राम होता है। 200-300 पब्लिक आते हैं पूजा पाठ के लिए। तो हमारा इधर इस्कॉन तुसान में एक है। हम तुसान जा रहे हैं। You. Nice to meet you. And here there is one. Nice to meet you. You can have a seat here. He's the director of the institute. Well, I'm not the director. I mean, I'm public relations. Public relations manager. Our director is away. He's becoming a grandfather again. So, Public relations director. And I came with Bharatwala and I saw you with your wife. right. High houses of worship, they're all over the world. This one was in the Soviet Union. It was the first one that was built. It was destroyed in the Bolshevik Rebellion. This one is in Wilmette, Illinois. This is the one that's on the North American continent. I grew up in Chicago, Illinois, which is, and Wilmette was one of the suburbs of Chicago. So I've been inside this temple many times, even before I was a Baha'i. I've read a devotional programs there. This was, in fact, my wife and I are going back to the Midwest next week, and we hope to spend some time there, maybe even read a devotional program there. This one is the one that's in Kampala, Uganda. It's on the southern hill of Kampala in Uganda. It's on the African continent. This one is just outside of Frankfurt, Germany, so it's on the European continent. Let's see. No, wait, no, I take it. This is the one that's in Panama. That's the one that's just in Panama City, just outside of Panama City. This is the one that's in Frankfurt, Germany, just outside, actually in Illesheim. This one is in Sydney, Australia. This one is, I believe, in Calcutta, India. In New Delhi. This is on the Indian continent. It's in Delhi? Oh, okay, right. And there's another one that's going to be built in Chile. This temple that didn't point out to you, this is actually in Western Samoa. He was instrumental in making sure that this temple was built. When he became a Baha'i, he wanted a house of worship in Samoa, so this particular one is the Samoan temple. In fact, we just had a memorial service for the King of Western Samoa here. They had one at this house of worship a couple of weeks, no, it was end of July, and we had one here simultaneously. So, as a memorial. In his last days, he was exiled from Baghdad to Constantinople to Adrianople to Akka in Palestine, the prison city, and finally was permitted to live under house arrest in this particular house in Baji. That's where he spent his last days. So it's just a little bit of the history of the faith. विश्वा
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोष्येहा भवत् पुनः ततो विमं व्यक्रामशासनानशने अभि ततो विराजयायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरायानि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आश्रितानां सकलार्तिहन्ता धर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो तिलमङ्गलं सजानन्द स्वामी महाराज की जय. You welcome here. You give the flower, Swamiji. Come here. Swamiji will bless you. God bless you. God bless you also. God bless all of you. Thank you for coming. This is a introduction. Introduction to our institute. Oh, okay. That's just some information pamphlet. Pastor.